Hello, everyone. What are you doing now? Okay, you are preparing for graduation. Fine. So, what about after the completion of examination? Yeah, of course, the final year students are eyeing on the examination like NQT, WILP, MAT, CAT, yeah, TCS, Ignite, and all these things. Of course, the students from IT background, they will be targeting the examinations like NQT, TCS, yeah, WILP, yeah, Ignite, these kind of examinations. But yes, on the other hand, if I am talking about the management students, of course, they will be targeting CAT, MAT. Now, the thing is that in all these competitive examinations, there is a common segment, and that is known as vocabulary. Well, you are quite familiar with this particular term like vocabulary, but the problem is that you don't have sufficient word power. Your word power is not so up to the mark. प्रॉब्लम यहीं पे शुरुआत होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स आई एम गेटिंग द कॉल या व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड कि सर वोकैब के ऊपर कुछ सेशन बनाइए, कुछ वीडियोस प्रेजेंट कीजिए ताकि उसके जरिए हम लोगों को कुछ शब्द के बारे में परिचिति मिले. But let me tell you one thing that it's in your hand. If you are interested, you can easily enhance or boost up your vocabulary. Fine. To fulfill your purpose today, I am Nilanjan Bose, the professor of CIMAGE College, and I'm going to present an important session related to vocabulary. And through this particular video, I will let you know there are different kind of words which are really important from the perspective of competitive examination. And I'm quite sure that at the end of the session, you will be in a better position to deal with the questions related to synonyms and antonyms. All right? So without wasting time, let's get started today's session. Let us know that what are the words, and I will tell you that एक word के लिए कितना word का stock आपके पास होना चाहिए, ऐसा क्यों हम word को build up करें, आपका competitive exam के perspective में कौन word important है. All these things are going to be discussed in today's session. So watch out this video till the end so that you will learn a lot regarding words. तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आज हम लोग फर्स्ट वर्ड किसको डील करते हैं. So here comes. In the center, you will find the word like adroit, right? So many of you know what is the meaning of adroit, and those who do not know, for them, adroit मतलब होता है expert या skilled. Look, I have tried my level best to give you at least 5 words for one word. Yeah, for one word, you will get 4 words, right? So it will be a good stock of 5 words and which are similar, having some similar meaning. Like adroit, matlab, I have already told you that it means that expert or skill. So in the indirectly other word, if I talk about that is adept, yeah, depth. All the words are mentioned over here. You can easily have a look of all the words. Now, expert, adroit, skill, adept, and depth, all the words are in the same category. So you can easily say that these are the synonyms of this particular word like adroit. So why should I mention the rest of the words which are similar by meaning with the word that I am talking about like adroit? ऐसा बाकी वर्ड पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है जब हम एड्रॉइड का मतलब जान रहे हैं एक्सपर्ट या स्किल. तो व्हाई शुड आई नो अबाउट डेप्थ या एडेप्ट? यस, यू मस्ट नो because you know you never be sure about that which word is coming in your examination. आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है ऑप्शन में आपको एक्सपर्ट दिया रहे या एडेप्ट हो या डेप्थ हो या स्किल्ड हो. Now, if you do have only idea of only one word, कि adroit मतलब skilled होता है, so you will be searching for the rest of the words, rest of the options rather. अब वहाँ पे अगर आपको depth दिखाई देगा, so you will be in a confusion. Utter confusion will be there because you will not know, you will not come to know that what should be the correct option. In that process, you will not consume a lot of time and eventually you will just skip that particular question. सो आपको ये हैबिट बनाना होगा, आपको ये प्रैक्टिस करना होगा एक वर्ड के लिए एटलीस्ट 3 to 4 वर्ड्स स्टॉक हो जाए ताकि ऑप्शन में कोई भी वर्ड दे उससे रिलेटेड आप आसानी से सही आंसर को पिक कर सको, राइट. बट वन सजेशन फ्रॉम माय एंड दैट डोंट ट्राई टू मग अप द वर्ड्स. रटने की कोशिश नहीं करें क्योंकि ह्यूमन मेमोरी का एक रिटेंशन कैपेसिटी होता है और वो हर एक वर्ड को आप रट नहीं सकते हो. सो व्हाट शुड बी डन? वेरी सिंपल, यू नीड टू प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस. रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना होगा, राइट. सो आई हैव गिवन यू द आइडिया कि एक वर्ड के लिए कैसे 4 वर्ड और हम लोग अपना आर्मरी में रखे, अपना वेपन के हिसाब से उसको यूज करें, अपना पोटेंशियल वेपन हो कि एक वर्ड के लिए 4 वर्ड का स्टॉक हो जाए. एट एनी मोमेंट इफ एनी वर्ड अपीयर्स इन द क्वेश्चन पेपर आई कैन इजिली टैकल दैट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. और आज होगा वही सेट ऑफ वर्ड्स. मेरा फर्स्ट वर्ड आपको हम बताएंगे एक वर्ड के लिए 5-6 वर्ड कैसे हम लोग स्टॉक करते हैं.
आज के इस वीडियो में उस वर्ड को बारे में हम जिक्र करेंगे जो सारा वर्ड एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन लाइक कैट या मैट या आई एम टॉकिंग अबाउट एनक्यूटी टीसीएस एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, वहां पे ये सारा वर्ड कॉमन फैक्टर है. तो अगर अच्छे तरीके से एक वर्ड के लिए कम से कम 5 या 6 वर्ड्स का स्टॉक हम रख ले, सो हु कैन स्टॉप मी, right? So watch out for this word, and this is fondle. Now what does it mean? Fondle मतलब होता है caress. Now what is the meaning of caress? किसी को सहलाना, किसी को love and affection के साथ care करना, right? Just an example, Mrs. Williams fondled her cat as it sat beside her. Mrs. Williams ने अपना कैट को फॉन्डल किए, मतलब उसको सहलाए, और कैस की जो उनके बगल में बैठी हुई थी, राइट? सो यहाँ पे कैरिस मतलब फॉन्डल, और फॉन्डल मीन्स कैरिस, इसका मतलब सहलाना, लव एंड अफेक्शन, केयरिंग एटीट्यूड को दिखाना. सो व्हाट शुड बी द अदर वर्ड्स? फॉन्डल तो आप जान गए, कैरिस भी आप जान गए, बाकी वर्ड क्या आपको जानना है? लेट अस स्टार्ट. Cuddle, it also means the same. Embrace, गले लगाना या सहलाना, almost same. Grow, corset and dandle. All these words will be the synonyms of the word like fondle. तो fondle के लिए आप कितना वर्ड का स्टॉक कर लिए right now? Caress, cuddle, embrace, grope, corset, and dandle. So 1, 2, 3. Now 4, 5, 6. 6 words आपके पास आ गया. So you will be in a better position to deal with the questions, and those questions will be related to selection of synonyms of the given word, right? So fondle के लिए आज के बाद आपके पास at least 6 words का स्टॉक आ गया है ना? ये अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि कमिंग एग्जामिनेशन में यू नेवर नो कि कौन वर्ड ऑप्शन के फॉर्म में आ जाएगी. So this was the first word of today. Now let us proceed. Let us know what is the second word. It's a very common word, students, as you all know that arrogant. A number of times we are using this particular word in our daily lives somehow when the situation demands. Arrogant attitude मतलब होता है very much bossy attitude, बहुत dictatorship वाला मामला, बहुत घमंड रखने वाले आदमी, right? Example क्या है? She found him arrogant and domineering. उनको लगा कि वो बंदा जो है वो बहुत arrogant nature की है, बहुत domineering है. He loves to dominate the other people, so it indicates bossy attitude. So what are the other synonyms? First one, it should be haughty. Next one, audacious. After that, it is supercilious. Then you can say conceited. And last one is swaggering. So, my dear students, right now for the word like arrogant, you have a stock of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 words once again. So altogether, you have 7 words in the same category. Like starting with arrogant, after that, it should be followed by bossy. You can also call it haughty, audacious, supercilious, conceited, and swaggering. So in this way, we should enhance our vocabulary. And in our daily life, when the situation demands, when such kind of situation rises, you try to practice it as much as possible. This is the process by which you can enhance your word power. Let us move to the third word for today. The third word is very common. It's known as garrulous. Now, what do you mean by garrulous? जो बंदा बहुत ज्यादा बात करते हैं उसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉमन इंग्लिश में अक्सर हम लोग लोकल में बोलते हैं टॉकेटिव. बहुत टॉकेटिव फेलो है. So talkative is the synonym of garrulous, right? So Mr. Garrulous, my garrulous neighbor had given away the secret. That is the example. Garrulous neighbor मतलब आपके पड़ोसी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं. Had given away the secret. उस सीक्रेट को बता दिए. इतना ज्यादा बात करेंगे सीक्रेट को कम आउट हो ही जाएगा, right? So garrulous means talkative. So what should be the other words? Let us know. First one, loquacious. Next one, babbler, chatty, voluble, chatterbox. All these words are the synonyms of the word like garrulous. So अभी फिर से आपके पास स्टॉक आ गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. अगर garrulous word को मिला दिया जाए तो आपके पास स्टॉक हो गया 7 words, and all the words mean the same, and that is talkative. So my dear students, I have tried my level best to give you number of words for one word. तो ये 3 ऐसा वर्ड हम लोग आज डिस्कशन किए जिसके बाद उसी वर्ड के लिए आपके 6 वर्ड्स का मिले. At least you have a stock of minimum, I can say that it should be around 20 words, right? Will it be healthy? Yeah, of course, because from this particular practice session you will come to know many new words, and these words are needed to be practiced on daily basis, right? चलिए अब हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं जिसके जरिए और कुछ नया शब्द आपके जो स्टॉक है उसमें शामिल हो जाएगी, राइट? तो चलिए हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ.
So this exercise, it is named as Who Am I? आपको पहचानना है मैं कौन हूँ. I am just giving you a features, certain features of that particular person, and you need to understand that who you are. Who are you, right? So first question, one who easily believes others. One who easily believes others. मतलब एक तरह से इसको हम रिपीटेशन इसीलिए कर दिए हैं क्योंकि आपका बिलीव में ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. जो बंदा अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं क्रेड्यूलस, राइट? उनको बोला जाता है क्रेड्यूलस. फर्स्ट वन एजाइल, इट मीन्स वेरी मच एक्टिव. फ्रैक्शनल, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है. और क्रेड्यूलस मीन्स द पर्सन हु कैन बी इजिली बिलीव्स अदर पीपल. नंबर टू, वन हु डिमांड स्ट्रिक्ट कन्फॉर्मिटी टू रूल्स. ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम स्ट्रिक्टली कोई रूल को फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इगोइस्ट, इट डजंट हैव एनी कनेक्शन विद दिस वन. ऑटोक्रेसी इज कंप्लीटली डिक्टेटरशिप, इट इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. And the last option is martinet. Yeah, that is the correct answer, because martinet is the person who demands strict conformity to rules. Rules regulation को 100% follow करने वाले व्यक्ति उसी से stick करेंगे, right? Now correct option is option C. Moving to question number 3, I am a man who is easily mortified. एक ऐसा हम बंदा है, ऐसा एक व्यक्ति है जो easily mortified किया जा सकता है. So first option indignant, it means angry, it should not be the answer. Second one irritable, जो बहुत ही खिटपिट करने वाले मिजाज के हैं, वो भी नहीं है. Last option ignominious, yeah, it is called shameful. तो mortified मतलब भी embarrassed होना, ashamed होना, it does have a connection with option C. So we can easily say that option C is going to be the correct answer. Now moving to question number 4, one who eats too much. ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाते हैं. First option glutton, second one greedy, and last one modest. Let us start with the first one. Glutton means, yeah, that is the person that glutton means a person who eats too much. That should be the correct answer. Greedy होता है लालची, उसके खाने के साथ संबंध नहीं है. खाना भी हो सकता है but other aspect भी तो हो सकता है. So why should I go for option B? नाउ ऑप्शन सी, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ऑप्शन बी का मतलब होता है मॉडेस्ट, मतलब विनम्र स्वभाव की. उसके साथ खाने का तो कोई मतलब नहीं है, राइट? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Right. Now let us move to the last question of today's session. One who talks fluently, readily, or incessantly, and that person is called what? एक ऐसा बंदा जो फ्लुएंटली बात करते हैं, रेडली बात करते हैं, इंसिसेंटली बात करते हैं, उस बंदे को क्या बोला जाता है? फर्स्ट वन वॉलंटरी. नो, वॉलंटरी किसको हम लोग बोलते हैं? जो अपना स्वेच्छा से कोई काम कर सकते हैं, है ना, वॉलंटरीली. नेक्स्ट वन वॉल्यूबल. या, दैट इज द करेक्ट आंसर. वॉल्यूबल इज अ पर्सन हु टॉक्स फ्लुएंटली. तुरंत बात करना, फ्लुएंटली बात करना, कंटिन्यूअस मोड पे बात करना, that person is known as voluble. And last one, theist. You know that theist means a person who believes in God, in the existence of a person who believes in God is known as theist. So it does not have any connection with the question. So in that way, in today's session, I have tried many new words for you, and all the words should be practiced as much as possible by you so that you can boost up your vocabulary. I have tried my level best, guys, and I'm quite sure that all of you must have understood that what I wanted to convey to you. आप एक notebook में सारा word को एक जगह लिख लीजिएगा and just make it a regular practice कि रोज सुबह उठने के बाद एक बार उस सारे word को देख लिया जाए ताकि वो आपका दिमाग में उस सारा word रहे, and whenever the situation demands, you can use all these words, right? आज का ये सेशन डेफिनेटली आप एंजॉय किए होंगे, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट, क्योंकि वोकैब ऐसा सेक्शन है जिसमें आदमी अक्सर फ्लैट हो जाते हैं क्योंकि उसको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो हाउ विल यू प्रोसीड? सो राइट नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम क्वाइट श्योर दैट यू हैव अ गुड स्टॉक ऑफ वर्ड्स. ओके, so that's all from my side today. Thank you so much for patiently listening. And it has been a wonderful session. Really, it is going to be beneficial for you. I'm quite sure about it. And in the coming videos, I'll be presenting more words so that it can easily boost up your confidence level, and it can easily boost up your word power as well. So you'll be in a better position to deal with the questions related to vocabulary. Thank you. Keep on practicing. Thank you so much.